Driven beautifully, will have to run. Yeah, that's a single. Good cricket again from Sindh. Azam Khan looks comfortable out there. Third over gone, Sindh 14 for 2. That's the story so far. Khurram is out there in the middle with Azam Khan, Shashil Khan and Asad Shafiq. The two batters who have returned to the dugout. Imran Khan will continue from the commentary end. Azam Khan having some fun off the field. He's got it! It was straight, fast, and right on money by Imran Khan. This time Azam had no clue how to deal with that delivery. A perfect Yorker. Rather than Azam Khan having the fun on this occasion, Imran Khan has the fun. Bowls a full delivery, swings in, takes the off stump. And the death rattle for the batter, he doesn't want to hear that sound. No batter wants to hear that sound. Great bowling from Imran Khan. Azam Khan, a very slow walk towards the dugout. Should have been liking to be out in the middle, but yeah, had no answer for a perfect ball by Imran. Well, troubles for Sindh are increasing. Next up, Sarfraz. Captain walks in, Sarfraz Ahmed. A bit of difficult situation for him, but he likes to chase. 3 down already on 14. Oh, down the leg. That can have been a chance. Seemed like, probably for a moment, Imran was interested. Sarfaraz is here because of this beautiful full-length delivery, almost a Yorker, taking the off stump away. He was quite high, playing it quite high, Azam Khan. Couldn't reach the pitch of the ball. Brilliant, brilliant scenes. That's what fast bowling is all about. Nicely tackled away there with run away for 4 runs. That's what Sarfraz can do, attacking the bowlers. He does not take pressure. Brilliant shot. He keeps moving in the crease, makes sure he was able to play it fine. So moved to the off stump almost, covering the off stump and placing it on fine leg as the fine leg fielder was inside. Important 4 runs. It's almost the same condition, same situation Sindh was in the last match. They had to rebuild here. Now again Sarfaraz is there, but Azam, they have lost important wickets of Azam Khan also, who chipped in with a cameo. Ooh, just flirting around that off stump. It's a good ball with a slip in. It's a huge responsibility, Sarfaraz.
Khurram is due to run in this match too. He has been in form. He has been able to make his side win, but he got out early in the last match. He's due for runs. Hopefully he can come in this match and score those important runs to put 2 more points for Sindh. That's good. Just nipped back in. Right on one Imran Khan. He knows what's he dealing, and experienced bowler out there. Here's Khurram for you. He likes to take on bowlers. Big hits coming in. Cut shots, likes the width. And then this touch. It's really difficult to stop him when he's on the go. A lot of bottom hand clearing, flicking the inside infield. And then the big shots come in. He likes to move and likes to live up to this reputation. This means so much to him. Oh, no run there. Straight away a no from Khurram. Sindh, 4 overs gone now, 18 for 3. रावलपिंडी में बॉलर्स का दिन साबित हुआ है। हमने देखा है अब तक 156 रन्स बने, 11 विकेटें गिरी हैं। यहीं पर बैट्समैन का राज था 2 दिन पहले तक। और 18 रन्स पर 3 खिलाड़ी गंवा लिए हैं। खुर्रम मंजूर अभी भी नॉट आउट हैं अपने कप्तान सरफराज अहमद के साथ। वाजर क्या कहेंगे, बैटिंग बुरी हुई है या बॉलिंग बहुत ही अच्छी थी? कुछ मिक्सचर है दोनों का। इसमें बॉलिंग भी अच्छी देखने को मिली है और थोड़ा सा मुझे लगता है कि बैट्समैन अडेप्ट करने में नाकाम रहे हैं, दोनों साइड्स के बैट्समैन। अगर बॉल थोड़ा सा फंस रहा है तो जिस तरीके से अब ये बैट्समैन कोशिश कर रहे हैं कि डेड बैट से रोक के सिंगल ले रहे हैं, और जैसे सरफराज अपने कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चल के ऑफ स्टंप पे जा रहे हैं। समटाइम बड़ी हिटें मुश्किल हो जाती हैं, तो आपको ये करना होता है कि एंगल्स बनाने पड़ते हैं, सॉफ्ट हैंड से सिंगल्स लेने पड़ते हैं। एक और अच्छी गेंद थी, और नई गेंद के साथ अगर आप यहाँ गेंद को आगे गिराते हैं तो मदद मिलती है। कल से हम देख रहे हैं सीम मूवमेंट भी है। अजहर जिस तरह कह रहे थे कई गेंदें रुक कर आई हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसी पिचेस नहीं है कि 12 विकेटें आपकी गिर जाएं और रन्स बहुत दुश्वार हो जाएं। बिल्कुल, जब आपको जब चीज़ें टफ होती हैं तब आपके डिफरेंट स्किल्स बाहर आती हैं। अच्छे पिच पे तो आप हिट द बॉल, सी द बॉल, हिट द बॉल वाली कहानी होती है, लेकिन जैसे पिच पे आपको थोड़ा क्राफ्ट करनी पड़ती है इनिंग और थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है। 6 रन 7 रन आप जो है थोड़े से अगर आप सिंगल्स की तरफ फोकस करें, क्योंकि फील्डर्स अभी भी देखा है कई आपके पास गैप्स होते हैं जहाँ से आप सिंगल ले सकते हैं। फिर सरफराज जिस तरह अभी पिछले ओवर में उन्होंने चौका मारा, ऑफ स्टंप पे गए, सिर्फ हल्का सा क्लिप किया फाइन लेग की तरफ, तो उस पर 4 रन हासिल किए। तो इस तरह की बैटिंग करनी पड़ती है। या सरफराज अहमद के लिए ये बहुत ही मौजूद सूरत हाल है। हदफ बहुत ज़्यादा नहीं है और ये बिल्कुल अपने मिजाज के मुताबिक खेल सकते हैं, वक्त भी बिता सकते हैं पिच पर शुरू में। पिछले मैच में उन्होंने अपनी खोई हुई फॉर्म बड़ी हद तक बहाल की थी, 44 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली थी। आप अगर केपी की इनिंग्स देखें तो एक वाहिद शिनवारी ने जिस तरीके से एंड किया इनिंग को, वो बहुत ज़बरदस्त था और उसकी वजह से टीम में दोबारा जान आई और उस कैमियो की वजह से अब ये गेम में वापस आए हैं।
उसके अलावा तमाम बैट्समैनों ने स्ट्रगल किया, तो विकेट में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मुश्किल कर रहा है बैट्समैन को। ये एक और खूबी है दोनों के दरमियान, बहुत अरसे से ये खेलते आए हैं एक साथ कराची की टीमों में, अब सिंध की टीम में, इसलिए एक दूसरे को समझते हैं, अच्छी रनिंग करते हैं। सरफराज अहमद का शुमार वैसे ही पाकिस्तान में अच्छे रनर्स में किया जाता है। बिल्कुल घबराने का इस वक्त कोई ऐसा मामला नहीं जिससे घबराएं। अभी 3 विकेटें ज़रूर गिरी हैं, लेकिन जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और केपी की इनिंग में आखिर की 6 ओवर निकाल दें तो उनकी बिल्कुल बैटिंग ऐसे एक टाइम पे लग रहा था वे 100 रन भी नहीं बना पाएंगे। तो बैटिंग अभी सिंध के आने में वाले प्लेयर्स भी ऐसे हैं जो फॉर्म में हैं। हसन खान ने बड़ी कंट्रीब्यूशन की है, फिर उनके जो लेफ्ट हैंडर हैं दानिश अजीज़, वो उन्होंने भी एक मैन ऑफ द मैच हासिल कर रखा है। अनवर अली बहुत अच्छे खेलते हैं, तो उनके पास बैटिंग मौजूद है, सिर्फ इनको थोड़ा सा अप्लाई करने की ज़रूरत है। और सरफराज अहमद से बेहतर प्लेयर नहीं हो सकता इस वक्त। बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, और अगर ये थ्रो लग जाती स्टंप्स पर फ़खर जमान की तो सरफराज अहमद को वापस जाना पड़ता पवेलियन में। आखिरी गेंद पर 1 रन लिया, स्ट्राइक को रिटेन किया सरफराज अहमद ने। ये स्ट्रोक के साथ ही दौड़ पड़े थे, लेकिन फिर भी ये पीछे रह जाते। फ़खर जमान ने खासी मायूसी का इजहार किया। 22 पर 3 इस रिस्की रन के साथ स्कोर है। सिंध को 100 बड़ा उम्दा स्ट्रोक, लेकिन रन एक ही मिलेगा। सरफराज अहमद की स्ट्रेंथ को देखते हुए ऑफ साइड में स्क्वायर ऑफ द विकेट शिनवारी को तैनात किया गया है। इमरान बड़ा उम्दा स्पेल कर रहे हैं, अच्छे रिदम में लग रहे हैं। मुसलसल उनका तीसरा ओवर है इस पावर प्ले में। 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हाल ही में ये शायद सुर्खियों में रहे थे, और जब विकेट ली और सेलिब्रेट कर रहे थे, लगता है जवाब देना चाहते हैं अपने नाकदीम को। अभी थोड़ा सा प्रेशर बना के रखना है केपी को, अगर इस मैच को उन्होंने जीतना है। अगर बहुत ज़्यादा सिंगल्स अलाउ करेंगे, 1 रन देंगे सरफराज को या खुरम को आराम से, तो वो खुशी से उसको खेल करते रहेंगे, क्योंकि रन रेट जो है वो 7 रन का है सिर्फ। और जैसे जैसे पार्टनरशिप डेवलप होगी उनके लिए आसानी होती जाएगी। हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं रावलपिंडी शहर में। फिर तक जा पहुंचे और इजाफी रन्स मिल जाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं है इमरान अरशद इकबाल की इस कोशिश से। मजमूई तौर पर 5 रन्स मिलेंगे। अग्रेसिव रनिंग दोनों बैट्समैनों की जानिब से, और गलत थ्रो करने की पर मजबूर किया, और कोई बैकअप नहीं था। अरशद इकबाल जो है वो शायद ये सोच रहे थे कि बैटिंग एंड की तरफ थ्रो होगा, लेकिन इफ्तिखार ने बॉलिंग एंड की तरफ भेज दिया। इस तरह के रन्स देना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती केपीके की टीम। ये देखें, अगर अब फील्ड का सारे प्लेयर्स जो हैं वो तकरीबन सर्कल से आ रहे हैं। मिड ऑफ आई कैन अंडरस्टैंड
के पीछे से आए, क्योंकि वहाँ पे ज़रा ज़ोर से शॉट लगता है। कवर के फील्डर दोनों में से एक को कम से कम एक सिंगल पे आना चाहिए। मिड ऑन के फील्डर अरशद इकबाल पीछे थे और दराज कद भी हैं। यही ख्याल था खुर्रम का कि वो झुक नहीं सकेंगे। उन्होंने पिक किया उन्हें और साथ साथ रन भी। ज़्यादा जल्दी में नहीं लगते खुर्रम, जानते हैं कि एक एंड पर उन्हें रहना है, दूसरे एंड पर सरफराज तेज़ी से रन्स बना सकते हैं। जब तक आप इतने रन्स को डिफेंड करते प्रेशर नहीं डालेंगे, डॉट बॉल्स नहीं होंगे, तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरह का टोटल डिफेंड करना। फिर वही गलती जिसकी निशानदेही की थी अजहर ने कि फील्डर बिल्कुल दायरे के दहाने पर हैं। ये आखिरी नज़ारे हैं आज के सूरज के। बादलों के कई सिलसिले जो कुछ देर पहले तक सुरमई थे अब सुर्ख होने लगे। इस बार 2 की कॉल है, लेकिन पहुंच गए अरशद इकबाल। अच्छा एंटिसिपेट किया उन्होंने और एक ही रन तक महदूद किया यहाँ खुर्रम को। पावर प्ले मुकम्मल हुआ 32 पर 3। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इस मौके पर जारी है। अंपायर इमरान इशारा कर रहे हैं अब नॉन पावर प्ले मरहले का। फील्डिंग खोल सकते हैं इस वक्त अगर चाहें। कितनी ज़रूरत है इस मौके पर, कितने फील्डर दायरे के बाहर इन्हें रखने चाहिए? वैसे तो 5 रख सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपको एक एक रन भी बहुत ज़रूरी है यहाँ रोकना। अजहर शिनवारी कंटिन्यू करेंगे पवेलियन एंड से, और जैसे हम पहले बात कर रहे हैं अब क्योंकि सर्कल खुल जाएगा और ज़्यादा सिंगल्स अवेलेबल होंगे दोनों बैट्समैनों के लिए, तो जो फील्डर दायरे के अंदर हैं उनको ज़रूर एक रन को बचाना है, क्योंकि बैट्समैन जब तक एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करेगा तब तक उसकी विकेट हासिल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब बॉल भी थोड़ा स्विंग होना बंद हो जाएगा। जब तक बैट्समैन कुछ डिफरेंट नहीं करेगा, मिस्टेक करने पे आप मजबूर नहीं करेंगे बैट्समैन को, तो वो इनिंग्स को डीप ले जाता जाएगा, और जितना नीचे जाएगी इनिंग डीप जाएगी उतना बैटिंग साइड जो है वो फेवरेट होती जाएगी। उस्मान शिनवारी अपना दूसरा ओवर शुरू कर रहे हैं पवेलियन एंड से, और एचिया इसे कट करने के लिए गए थे खुर्रम, लेकिन शिकस्त खा गए और कैच लिया यहाँ पर नए विकेट कीपर ने खैबर की जानिब से। हारिस ने गेंद को पकड़कर खुर्रम की इनिंग्स का खात्मा कर दिया। बहुत ही बड़ा विकेट केपीके के लिए, और जिस तरह उन्होंने पावर प्ले में आगाज किया, सिंध के बैट्समैनों को बिल्कुल बांध के रखा हुआ था, और खुर्रम मजूर एक अच्छे आगाज के बाद आउट होके पवेलियन जा रहे हैं। 13 रन से बनाए 11 गेंदों पर और 32 पे 4। अब तक जिन 3 बॉलर्स को आजमाया है, उस्मान शिनवारी, शाहीन अफरीदी और इमरान खान को मोहम्मद रिजवान ने, तीनों ने उनको मायूस नहीं किया और विकेटें लेकर दी। थोड़ा सा ये बॉल बाहर निकला, बाहर ज़रूर था, उसको थर्ड मैन पे खेलना चाहते थे 1 रन के लिए,
थोड़ा सा बाउंस भी लिया बॉल ने और आउटसाइड एज और एक आसान कैच हारिस के लिए। मैच बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मोड पे जा चुका है और अगर एक विकेट और सिंध यहाँ पे खोती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मैच में वापस आना। नए बैट्समैन दानिश अजीज़ के लिए स्लिप में भी इफ्तिखार को बुलाया गया। ये ज़्यादा इन स्विंग करने के लिए जाने जाते हैं लेफ्ट हैंडर को। उस्मान शिनवारी बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे थे, इसलिए अपनी लाइन को कंट्रोल नहीं कर सके। थोड़ा सा यहाँ पे डिसिप्लिन शो करने की ज़रूरत है उनको। ऑलरेडी आप जो दूसरी ऑपोजिशन है आपकी उसको अंडर प्रेशर ला चुके हैं और आपने अब अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है। अपनी तरफ से जो अच्छी लाइन एंड लेंथ है उसको कंटिन्यू रखना है। विकेट से भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत स्लो भी आ रहा है थोड़ा पिच पे पड़ने के बाद। उस्मान शिनवारी इस बार बिल्कुल अपनी जगह पर गेंद को गिराया जहां पर उनके कप्तान चाहते हैं। इस पिच में मदद मौजूद है सीमर्स के लिए। स्पिनर्स की भी गेंदें हमने टर्न होते हुए देखी हैं। T20 में भी कई बार देखा गया है ये लो स्कोरिंग मैचेस खासे दिलचस्प होते हैं, ख़ासतौर पर दूसरी बॉलिंग करने वाली टीम अगर जल्दी विकेटें ले ले। तो यही काम किया है यहाँ केपी ने। हालांकि आज वहाब रियाज नहीं खेल रहे, उनके अलावा आसिफ अफरीदी भी नहीं है, हफीज़ भी नहीं। अच्छी बैटिंग दानिश अजीज़ की जानिब से। खुरम और सरफराज यही काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे जब खुरम मंजूर आउट हुए उससे पहले। और दानिश को भी सरफराज क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि रन रेट हम कवर कर लेंगे, लेकिन अगर हम एक रन लेते रहेंगे, स्ट्राइक रोटेट करते रहें, विकेटों के दरमियान तेज़ भागें, कम से कम रिस्क लें, तो मैच अभी भी हमारी ग्रिप से बिल्कुल निकला नहीं है। सरफराज अहमद को क्या बाउंसर फेंकेंगे क्योंकि दो फील्डर हैं इस वक्त लेग साइड में स्क्वायर के पीछे, इमरान खान और शाहीन अफरीदी। जी हाँ, वही किया और सरफराज अहमद कॉट बिहाइंड। एक और विकेट उस्मान शिनवारी ने हासिल की। क्या बात है तारिक भाई आपकी, बिल्कुल सही जज किया और जैसे प्लान का आपको बिल्कुल पता था कि क्या करेंगे। अच्छा शॉर्ट पिच बॉल, वेल डायरेक्टेड बाउंसर, और ये मेरा ख्याल ग्लव्स को छूते हुए हारिस के हाथों में गया। और ये ओवर जिसको कहते हैं शिनवारी का आज दिन है, पहले बल्ले के साथ और अब बॉल के साथ मैच का नक्शा बदलते हुए। बिल्कुल मैच का पांसा उन्होंने पलट कर रख दिया है। सरफराज अहमद की बड़ी कीमती विकेट उनको मिल गई। उन्होंने 13 रन बनाए 34 पे 5। सोहेल खान आए हैं बैटिंग करने के लिए और बैटिंग ऑर्डर में चेंज। और सोहेल खान इससे पहले विकेट बहुत ज़बरदस्त बाउंसर था ये तारिक, और बहुत ही ज़बरदस्त कैच। जैसे पहले हमने कहा कि जैसे शिनवारी का आज दिन लग रहा है, आज बैटिंग के साथ और बॉलिंग के साथ दोनों में अच्छा परफॉर्म करते हुए बहुत बड़ी विकेट सरफराज की, जो कि इनिंग को बांध के रखते हैं, उनको आउट किया। सोहेल खान की आज विश पूरी हो गई। उनको ओपनर जाते नहीं है और उनका दिल होता है कि मैं बैटिंग करने चला जाऊं। बैटिंग का उनको शौक है। यहाँ पर कुछ अर्सा पहले सलमान बट
कैप्टन थे, वनडे टूर्नामेंट हो रहा था पाकिस्तान कप, तो वो इन्हें पिंच हिटर के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। बहुत खुश थे, उन दिनों रन्स भी बना रहे थे और विकेटें भी ले रहे थे। सुहेल खान 2019 में अप्रैल में। बहुत शौक है इनको बैटिंग करने का, और जैसे जैसे ही 2 विकेटें पाकिस्तान की गिरती हैं ये बैट करके बैठ जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं शीशे के सामने। ये गेंद पैड पर लगी और अंपायर की उंगली हरकत में। एक और कामयाबी उस्मान शिनवारी की। सुहेल खान बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए और गेंद की पेस पर शिकस्त खा गए, साथ साथ एंगल पे भी। विकेट को टारगेट किया, थोड़ा सा शायद बॉल लेग स्टंप की तरफ जा रहा था लेकिन शायद क्लिप कर जाता और अंपायर ने डिसाइड किया ये आउट है। एक बहुत ही ज़बरदस्त ओवर, 3 विकेटें इसी ओवर में शिनवारी ने हासिल की और दे लुक पम्प्ड अप। ये राउंड द विकेट आए, पहले आउट स्विंग पर आउट किया इन्होंने खुर्रम मंजूर को, फिर बाउंसर पर विकेट ली और आखिर में ये इन डिपर इसे काम में लाए। बल्ला तो बहुत दूर था बैट से, काफ़ी क्रॉस चले गए थे सुहेल खान और एक विकेटों के अंदर सीधा बॉल किया और जितना जितना दोबारा देख रहे हैं इस रिप्ले को उतना ही आउट लग रहा है। सुहेल खान स्कोरर्स को जहमत दिए बगैर गए 34 पर 6। हसन खान पिछले मैच में ये बैटिंग हीरो साबित हुए थे, आज बहुत ज़्यादा जल्दी बैटिंग मिल गई क्योंकि जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है बिल्कुल वो पेस के सामने छलनी होकर रह गई है। बहुत ज़्यादा दबाव होगा दोनों बैट्समैनों पे, अब दोनों यंगस्टर्स हैं, दोनों ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है पिछले 2-3 मैचेस में। कॉन्फिडेंस में ज़रूर हाई होंगे लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है सिंध की बैटिंग की वो कुछ अच्छी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त मंजर इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का, आहिस्ता आहिस्ता रोशनी कम हो रही है, जो मसनूई रोशनी है वो टेक ओवर कर रही है। चार गेंदों और रन्स के दरमियान फर्क बढ़ता जा रहा है। अर्शद इकबाल के लिए अच्छा वक्त है लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग करने का, क्योंकि अच्छा आउट स्विंग कर सकते हैं ये दानिश अजीज को। स्लिप एक यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त अर्शद इकबाल, क्योंकि बिल्कुल दबाव में है दोनों बैट्समैन। मोहम्मद रिजवान ने अच्छी कप्तानी की, हालांकि बहुत कम स्कोर था उनकी टीम का, और इस बार गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंचने से पहले ही अपील करना शुरू कर दी थी अरशद ने। दोनों एजेस को बीट करने की अहलियत रखते हैं लेफ्ट हैंडर के अरशद। जी बिल्कुल, और हारिस आज का मैच खेल रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेले हैं, बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं और दाद देनी पड़ेगी रिजवान को। बहुत कम देखने को मिलता है कि आप खुद ग्लव्स छोड़ें और एक यंगस्टर को चांद देखें। बहुत ज़बरदस्त मिसाल कायम किया आज रिजवान ने, एक अपने यंग प्लेयर को चांस भी दिया है और उनके साथ रहनुमाई भी कर रहे हैं उनकी। और उसकी एक वजह यह है कि रिजवान बहुत अच्छे फील्डर भी हैं, क्योंकि इस वक्त मैदान पर वो केपी के सबसे अच्छे फील्डर करार दिए जा सकते हैं। पाकिस्तान टीम के लिए भी वो इस बात को साबित कर चुके हैं।
शायद मुकाबला बहुत सख्त नहीं है दीगर फील्डर्स के साथ। रिजवान जो हैं वो जब फील्डिंग करते हैं तो उन्होंने आपने देखा होगा ज़बरदस्त कैचेस लिए हैं फील्डिंग करते हैं, और स्लिप के बड़े सेफ फील्डर हैं। तो ये फील्डिंग और ग्राउंड में कीपिंग ये हरफन मौला हैं उधर, तो हम इनको कहीं भी शॉर्ट लेग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और फिटनेस तो आपको पता ही है उनकी। कप्तान कैसे हैं, क्योंकि SNGPL में आपके साथ बहुत खेले हुए हैं। और रन आउट का मौका इसे हाथ से जाने नहीं दिया फखर जमान ने। दोनों बैट्समैन चंद कदम आगे निकले थे, वापसी का कोई रास्ता नहीं था और हसन खान को जाना पड़ेगा बदकिस्मती से। मिक्सअप कॉलिंग शायद मिली नहीं। दानिश अजीज ने पहले कॉल किया, फिर बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि शोएब मलिक बहुत करीब खड़े हैं, फिर उन्होंने मना किया हसन खान को, और फिर हसन खान के पास लौटने का कोई मौका नहीं था। चीज़ें जो हैं वो बैड टू वर्स्ट हो रही हैं सिंध के लिए, और ऑलमोस्ट ये गेम उनके हाथ से निकलता ही जा रहा है। हसन खान ने कोई रन नहीं बनाया और 34 पर 7। First arm bowling round. That worm is not just slow, it's sluggish as well. I don't know where it's heading. I mean, you were doing the pitch report. That's not 34 for 7. You can't blame the pitch for this. This was surely Danish's call. I mean, Hassan has nothing to do with it because the ball's behind him. He's going to go on his partner's call. And you suddenly abort, you leave him in no place. That's what he's saying. It's your call. That's suicidal. You're already 6 wickets down. Not that it would have made any big difference, but I don't understand why Sohail Khan was sent ahead of Hassan and Anwar Ali. Just to hit their way out of what? They're still 34. They need 138. But it's only Sindh to blame themselves. They started so well in the field. Great catches, brilliant bowling. Got the opposition where they want them to be. And then they started leaking runs. 64 in the last 6. 30 for Usman Shinwari, not out at the highest scorer. And when they came out, they were nowhere in the chase. They did that in the last match also, 66 of the last 5. So they are leaking runs at the end of the innings. Usman Shinwari is having a dream match. Scored quick 30 at the end of the innings when the team really needed those runs, and now 3 wickets of just 7 runs. Yeah, he's bowled well. Good sharp one to rise, got Khurram Manzoor, a perfect bouncer to get Sarfaraz. Good bowling, even Imran Khan. Bowled a brilliant Yorker, dipped in a little bit on Azam Khan. Yes, the bowling changes proved very handy today for KP. Rested the regular bowlers, bringing in these experienced bowlers also.
I think that's 2 points surely slipped away by Sindh. They messed it up completely. 138 for 9. Usman Shinwari 36 not out. And then the next best was Musaddiq 25. They were struggling throughout, KP, with the bat. Sohail Khan brilliant 2 for 12. But their reply has been even better. Even from here, Sindh only requires 9 runs per over. That's not a big ask. The only problem is the loss of wickets. So KP, if they win this, and they should, they'll confirm their place in the semi-finals. There you go. If you're not allowed to come to the ground, you may as well get on the rooftop of your house. You've got to be careful. Oops. They are making great memories. They are going to remember this, watching this from quite interesting seats there. That won't help, though they have a lot of overs. But there's no batsman after this. End of the over, 9 gone, 37 for 7. 66 balls, 102. You need wickets. Meanwhile, Arshad will bowl a second over. He's bowled a maiden. Call is for 2. He'll challenge Imran's shoulder, and they make it. That's well done. I was talking about it in the afternoon. His commitment levels, Anwar Ali, is 100%. He'll still not let go any opportunity if there's a run available. He'll push you as a partner. Yes, in all 3 departments, we can see that commitment from Anwar Ali, whether it's bowling, whether it's fielding, batting. He gives his 100% for the team, sets high standards for this team. Getting a single now. Yeah, he puts his 100%. And he gave away 20 runs in the last over to Usman Shinwari. That's also a problem. That's part of the game. You can't take it away from Usman Shinwari. Also, he played quite an incredible knock, coming back into the side after a few breaks from playing. And I guess what they really need from Anwar Ali is something like what Shinwari did for his team, and Anwar Ali is definitely capable for much more. Required runs now less than 100, and that's a boundary, so that's a good shot played by Danish. I wouldn't write them off, Sindh. Got Danish the man of the match not so long ago. He plays well. Anwar can start smashing the ball when the time comes. Great timing on that occasion, making sure he was not hitting it too hard, just perfect placement and perfect timing. 4 important runs. The run rate is not a big issue. It's still 9 and over. We have seen teams scoring 12, 13 runs from an over in the last 10. There has to be a game plan, Sana. I mean, they'll need to figure out the last 10 overs. Who's bowling what, how many bowlers have how many overs left, who they want to target. He's not a happy man today, for sure. Would be angry with himself and where they've come. Yes, they lost unnecessary
necessarily wickets at regular intervals. Wicket of Asad Shafiq, wicket of Khurram Manzoor. Just a single. They've already got 8 of this over, 9 of this over. That's the required run rate they need to actually win this match. The only issue, the big concern for Sindh at the moment is the wickets they have lost. This is the last established batting pair. After this, the tail will become more difficult for them. No, 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 no. Direct hit. We'll have to wait and see. Did Danish make it back in time? He looks okay. Fakhar Zaman is always in action on the field, taking good catches. This time in the inner circle. Quick throw, quick release. An equally good dive by the batsman to save himself. His bat was grounded. Yeah, safe. Yeah, just in. Good throw that. So we're talking about, you said 9.5 on 9 runs and over. This over has got them 9 up till now. Not out. 93 of 61. And that's 10 overs gone. 46 for 7. Run you over. So the last 10 of this innings, halfway through. You also feel they need to calm down a touch. Just being a bit jittery. They both get out of their crease. We've seen a run out. Yes, definitely there's some nervousness still between these two batters, trying to take run of every ball. That's why creating an opportunity for the fielding side. They just need to calm themselves down. That's why I think Sarfaraz at 2 down would have been a better choice instead of Azam Khan, which was a big loss. I mean, we saw what he can do in the middle overs, and in the last match when Sarfaraz promoted himself, it was really good for the team. So I'm not sure why they changed it again when something was working well for them. They needed, okay, KP, it's understandable that KP changes their players and their team because they are comfortably in the semis. But for Sindh, they needed to win this one. That should be 4. It is. 50 up for Sindh. They've crawled their way to this. Lost 7 of their teammates in the process. I still get a feeling somewhere till Anwar Ali is out there, they'll try to get it as close as possible. If these two can play till the 19th over, we might see an early finish might see a couple of overs to spare in the chase of this target. Shaheen Shah's spell is crucial. They will have to play that sensibly because he is out there to get wickets. That's why he's come to bowl this spell. KP knows they get one of these two, and surely they'll penetrate their way all the way to the end. In that way, Rizwan has been quite proactive as a captain. He has brought on the wicket takers. He doesn't wait to finish the match at the last.
He's been lucky as well, Rizwan, in a safe zone. He makes 4 changes. He leaves out all the experience of Junaid and Wahab Riaz, and he gets Imran Khan, who bowls so well. Suddenly gets into rhythm straight away, as if he never left the tournament. And not to forget Usman Shinwari, who not only bowled really well today, but batted really well as well. The dot balls, but it's a sensible move from Anwar Ali. See the over off. 50 for 7 after 11. Speaking of lowest totals in the National T20 Cup, 55 by Dera Murad Jamali versus Lahore Lions in Karachi back in 2014. So that, I suppose, will remain the lowest. Should be the case, because they're just 4 runs away. Sindh 50 for 7. Width and cracked away for 4. This wicket still good for batting. Definitely cracker of a shot from Danish. We have seen what he can do in the last matches. Strongly belted away. Just look at that power behind that shot, right in the gap. Excellent 4. Nice flow of the bat. Had that width available. Ball sitting nicely on a good height. So we were just talking about how you can plan and chart out what you want to do in the remaining overs. So if 9.5 is your required, you get a boundary. From here you just take calculated risks, rotate the strike, take the game as deep as possible. And the advantage on Sindh's side is both these batsmen are really fit. They can take those doubles off the boundary. So first boundary of the first ball, they can just take single runs, doubles. Yeah, just stay in the chase. That's important. Just hanging around there, not giving your wicket namelessly, won't make sense. This is the match summary up till now. 138 for 9 after KP was put into bat. Usman Shinwari, 36 not out. That's the highest score there. In response, Sindh has tried the level best to award this game. But there's a fight going on now where Danish Aziz and Anwar Ali are trying to put some sense into this chase. Nicely driven. They want to come back for 2, make it 4. 2 boundaries in the over. Job done. Imran Khan making it difficult for Rizwan to set the field here. The first 4 was of a short pitch ball. This one from a full length delivery. You can't be bowling 2 lengths on a wicket like this. Just one fielder in sweeper. That was more towards the point region now. 4 easy runs. Good follow through from the batsman. Great timing there. Good call that from Danish. Well responded by Anwar Ali as well. So they've got the 9. Required is 9.8. Get a big over somewhere in between.
And they didn't have to take any risk to make these 9 runs. They got 2 bad balls, converted them into boundaries. There's still 1 ball to go. If there's another boundary or a single or a double of this, the required run rate can go down or they'll maintain it. So the run rate is not an issue for them at the moment. The main issue is that these two walk the team through these last 9 overs, 8 overs left. If they can do that, they can pretty much win the game for the team. So make that 10 of the over. The chase is on. It's 60 for 7. ये रावलपिंडी का अंग्रेज़ों के ज़माने का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को मुसाफिर ट्रेनें जाती हैं और यहाँ पर बहुत तरक्की हुई जिस ज़माने में अंग्रेज़ों की आमद हुई थी इस शहर में। बड़ी खूबसूरत इमारत है, बिल्कुल जैसी इमारतें हमें मलका विक्टोरिया के ज़माने की लगती हैं वैसी ही। रावलपिंडी स्टेडियम और एक खूबसूरत मंजर यहाँ पे। सिंध के लिए थोड़ी मुश्किलात है। इन दोनों ने कोशिश की है मरीना के इस इनिंग्स को संभाला दिया जाए, फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाया जाए और इनिंग्स को एक ऐसे मरहले तक ले जाया जाए 15 ओवर्स तक जहाँ पर 3 विकेटें इनके हाथ में हों, फिर ये अटैक करें। अभी तक किसी स्पिनर का इस्तेमाल नहीं किया है कप्तान मोहम्मद रिजवान ने। दानिश अजीज़ आमतौर पर इंतज़ार करते हैं स्पिनर की आमद का, उन पर हमलावर होते हैं। आज फास्ट बॉलर से ही उनका पाला पड़ा है। और फाइनल की जानिब खेल दिया, बीट किया उन्होंने इमरान खान को जो दायरे के अंदर थे। बहुत ज़रूरी चौका मिल गया ओवर की इब्तिदा में ही दानिश अजीज़ को। डाउन द लेग थोड़ा सा बॉल किया और ये रुकनी चाहिए थी जिस तरह का स्टैंडर्ड है केपी की फील्डिंग का, लेकिन बीट कर दिया और लकी 4 रन्स। बहुत बड़ी बैटिंग लाइन है लेकिन ज़्यादातर स्ट्रोक प्लेयर्स हैं इनके पास और इस विकेट पे हमने देखा कि ऑन दी अप खेलना मुश्किल है, ड्राइव भी, और इतना इजीली बल्ले पे आ नहीं रहा और उन्हीं मुश्किलात का सामना रहा है सिंध को। थोड़ी सेंसिबल बैटिंग करनी पड़ेगी। एक और अच्छा स्ट्रोक, एक और चौका, बिल्कुल भी कुअस्सफ नहीं करना पड़ी। बिल्कुल देर से उन्होंने पॉइंट के फील्डर को बीट करने के लिए अपने बल्ले का फेस ओपन किया, पेस का इस्तेमाल किया। उनका बैटिंग का मुजाहरा दानिश अजीज़ की जानिब से। खूबसूरत टाइमिंग और प्लेसमेंट परफेक्ट थी, ओवरहिट नहीं किया। 2 चौके हासिल कर चुके हैं, काफ़ी प्रेशर जो है वो उतरा है और मुसद्दिक थोड़ा सा स्ट्रगल कर लें, दोनों साइड पे रन खा रहे हैं। केपी के लिए ज़रूरी होगा कि जो प्रेशर इन्होंने बिल्ड किया हुआ है उसको मेंटेन करें अगर डिफेंड करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल दानिश और अनवर काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं। यहाँ 4 मुस्तनद पेसर्स के साथ ये मुकाबला खेल रही है। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की टीम, उनके पास शुएब मलिक हैं जिनसे स्पिन कराई जा सकती है और इफ्तिखार अहमद भी। कोई मुज़ायका नहीं दानिश अजीज़ के सामने उनसे बॉलिंग कराने में। दूसरा रन यहाँ पर बनना चाहिए था लेकिन शायद शुएब मलिक के ख्याल से उन्हें आउटफील्ड में देखकर अपना इरादा तर्क कर दिया दानिश ने। बड़ा अच्छा ग्राउंड कवर किया शुएब मलिक ने, फिट वो हैं, इसमें कोई शक नहीं है और
हो सकते थे 2 रन, लेकिन शुएब मलिक के होते हुए नहीं, वैसे फील्डर नहीं है जिस पे आप चांस लें। स्पिन की आपने बात की, हमने सुबह भी देखा असगर को थोड़ा बहुत स्पिन मिला है जब उन्होंने छोड़ के बॉल कराई है, तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल पेसर्स जो है वो कामयाब नज़र आ रहे हैं इस विकेट पर। पहले आसिफ आफरीदी खेल रहे थे, जुहैब खान ने भी इक्का दुक्का मैचेस में शिरकत की है। बड़ी हैरत होती है रिजवान को देखकर, वो इतने ज़्यादा स्पिन के असीर नहीं है, उन कप्तानों में से नहीं है जो जिनको हम समझते हैं कि वो स्पिन को पसंद करते हैं। हालांकि इन्होंने अपनी ज़्यादातर क्रिकेट जो है वो मिसबाउल हक की कप्तानी में खेली है, SNGPL में भी। बिल्कुल माइंडसेट हर कप्तान का डिफरेंट होता है, मेरा ख्याल है सिचुएशन वाइज पिच को आप देखें, कंडीशंस देखें, ऑपोजिशन देखें, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि वो ज़्यादा पेसर्स पे रिलाई करते हैं। मूवमेंट देखने को मिली बाहर से बाहर की तरफ, और दानिश ने सीधे बल्ले के साथ खेल दिया। 71 पर 7, 13 ओवर्स के बाद। स्पिन की बात हो रही थी, कल से पहले तक जो स्पिनर्स की औसत थी विकेट हासिल करने की वो 40 थी, लेकिन कासिम अकरम के स्पेल के बाद उस्मान कादिर ने जैसे रात को बॉलिंग की, ये औसत कम होकर 35 की हो गई। और आज सिंध के बॉलर्स ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। आप देख सकते हैं हसन खान ने 2 विकेट लिए, 2 ही खिलाड़ियों को आउट, एक ही खिलाड़ी असगर ने आउट किया, लेकिन बहुत कम रन उन्होंने भी दिए। ये आगे चलकर स्पिनर से बॉलिंग कराना वो खतरे से खाली नहीं होगा। अभी मैच खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अनवर अली और दानिश अजीज ये दोनों में इतनी सलाहियत है कि ये पांसा पलट सकें। कई मैचेस फिनिश कर चुके हैं सिंध के लिए माजी में, और दोनों को पसंद भी है, थोड़ा सा स्पिनर्स को टारगेट करते हैं। अनवर अली को हमने देखा है कि अच्छी हिट्स मारते हैं, डाउन द ग्राउंड अच्छा मारते हैं, अच्छी स्टेबल बेस है। दानिश भी एक जहराना इनिंग्स उनकी भी हमने देखी, तो कहीं ना कहीं रिजवान के माइंड में ये चीज़ ज़रूर है कि अभी पेसर्स को इतना टारगेट नहीं कर रहे, इसी से कंटिन्यू किया जाए। एक 138 रन का क्या दिफा करने में कामयाब होगी केपी की टीम, जो इस चैम्पियनशिप में सबसे कम रन्स का दिफा करने वाली टीम है वो नॉर्दर्न है। उन्होंने सदर्न पंजाब के खिलाफ रावलपिंडी में ही 146 रन बनाने के बाद मैच जीत लिया था, और आज फिर ऐसा मुमकिन है बड़ी हद तक। अब ये फेवरेट है टीम केपी। स्टंप्स में नहीं लगी। ये आप देख सकते हैं पार्टनरशिप्स का बिल्कुल फुकदान रहा। पहली विकेट की शराकत में 1 रन बना, दूसरी के लिए 2। सबसे बड़ी पार्टनरशिप यही है 38 रन की, जो अनवर अली और दानिश अजीज़ ने मिलकर बनाई है। एक ओवर में जब 3 विकेटें उड़ाई थी शिनवारी ने, उन्होंने एक तहलका डाल दिया था। रन से शायद इतना फ़र्क नहीं आने वाला, यहाँ पर बाउंड्रीज बचाने की कोशिश होनी चाहिए। तो शाहीन अफरीदी का 1 ओवर है, उस्मान शिनवारी का 1 ओवर है, इसके बाद अरशद इकबाल का भी 1 ही ओवर रह जाएगा। लेकिन मुश्किल ये है कि इनके जो 5वें बॉलर हैं मुसद्दिक, अभी उनका सिर्फ 1 ओवर हुआ है।
मुसद्दिक थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे हैं, और जहाँ तक इन सारे बॉलर्स की बात की जाए, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि विद इन बॉडी करा रहे हैं, विद इन स्टम्प्स। कोई मौका नहीं दे रहे, कोई रूम नहीं दे रहे बैटर्स को कि वो बाउंड्रीज में डील करें। फिर बाउंड्री नहीं मिल पाई। देखिए कितने साए बन रहे हैं एक खिलाड़ी के बाहर। तारीकी जो है पूरी तरह छा चुकी है मैदान पर। इस वक्त ये मसनूई रोशनियां हैं। टेस्ट क्रिकेट जब डे नाइट हो रही होती है तो इतने ज़्यादा अगर साए बन जाएं तो अंपायर इस खेल को रोक देते हैं। तो 4 साए बनते हैं, यहाँ तो 4 से भी ज़्यादा बन रहे हैं। नाइट क्रिकेट में तो ये हमने देखा है, और हालांकि पिंक बॉल के साथ ज़्यादा देखा है, जहाँ पे पिंक बॉल से भी स्विंग मिलती है, लाइट्स की वजह से भी ज़्यादा स्विंग मिलती है। और शानदार शॉट खेला, सभी देखते रह गए। और ये गजब का छक्का लगाया दानिश अजीज ने। इस इनिंग्स का पहला 14वें ओवर का इख्तिताम हुआ 80%। लेंथ ढूंढ रहे थे, और ये वो लेंथ थी जिस पे बाउंड्री हासिल की जा सकती थी। दानिश अजीज ने जल्दी पिक की और वही अंजाम हुआ जिसका डर था। अर्शद इकबाल अच्छा फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन एक बहुत अच्छा मैक्सिमम अच्छी शॉट दानिश अजीज की। बिल्कुल सर नहीं हिला, बैट स्पीड लाजवाब थी। अच्छा फॉलो थ्रू आखिर में देखने में आया। मोहम्मद रिजवान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है दानिश अजीज ने। पिछले ओवर में उन्होंने छक्का लगाया, 5 चौके वो पहले ही लगा चुके थे। यॉर्कर फेंका, लेकिन लाइन से बहुत ज़्यादा हट गए थे मुसद्दिक। ये प्रेस बॉक्स है, 9 तामीर शुदा। इसमें हमें सैयद नज़ीर अहमद ये नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक है। शकील खान, जिनने पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, फास्ट बॉलर हुआ करते थे। ये वो ओवर है जिसमें सिंध जो है कैपिटलाइज कर सकता है। मुसद्दिक की बहुत ज़्यादा पेस नहीं है, थोड़ी सी विविड बॉलिंग हो रही है, और इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं दानिश और अनवर। कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो कम कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। मरीना लाहौर से वापस आई हैं। मौसम का फ़र्क है रावलपिंडी और लाहौर के मौसम में। जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ थोड़ी कतरे ज़्यादा ठंड है, लाहौर में इतनी नहीं है। आज तो हवा भी कुछ अच्छी चल रही है। लेकिन जो हमारे स्टैटिस्टिशियन हैं मज़हर अरशद, इनको हमेशा गर्मी लगती है। ये स्कर्दू में भी हूँ, किसी पहाड़ी इलाके में भी हूँ, इनके लिए मौसम कभी भी सर्द नहीं होता। नंबर्स और स्टैट्स से डील करते हैं, तो मेरे ख्याल है इसलिए इनको काफ़ी गर्मी महसूस होती है। अच्छा यॉर्कर फॉलो किया बैट्समैन को, जो चार्ज करने के लिए निकले थे। स्टंप्स को छोड़कर हिट लगाना चाहते थे अनवर अली। अनवर अली की सिग्नेचर शॉट है, डाउन द ग्राउंड जानते हैं, थोड़ा सा चार्ज लेके, लेकिन बहुत उम्दा बॉल मुकद्दस का। अच्छा यॉर्कर था। मुकद्दस के बारे में बात करें तो मुसद्दिक के बारे में, तो जर्मनी में इनकी फैमिली रहती है और ये सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पे वापस आते हैं। इनका इतना शौक है क्रिकेट का। अच्छी फील्डिंग, एक मरतबा फिर फील्डिंग का मेयार बेहतर रहा है केपी का थ्रू आउट इस चैंपियनशिप में। तो ये जो कम रन्स डिफेंड करना है, इसमें सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि बैटिंग टीम को एक पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है, उसी से इनिंग सवार हो जाती है।
वही हो रहा है इस वक्त। और जब बैटर्स बड़े हिटर्स भी हों और अपनी गेम से हट के खेल रहे हो, सिंगल डबल्स कर रहे हो, तो अपोजिशन के कप्तान के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है प्लान आउट करना बॉलर्स के हिसाब से भी और फील्ड पोजीशनिंग भी, क्योंकि वो कभी भी एक बड़ी हिट लगा सकते हैं। इस बार भी एक ही रन पर इक्तिफा करना पड़ेगा। उसके बाद 5 ओवर्स बाकी हैं। क्या शाहीन अफरीदी को अभी लाना चाहिए? इस पार्टनरशिप का यहीं पर खात्मा किया जाए। जो टेल एंडर्स बाकी रह जाएंगे उनको दूसरे बॉलर्स आउट कर सकेंगे। अच्छी कप्तानी होगी अगर शाहीन को लाते हैं, क्योंकि स्ट्राइक बॉलर हैं आपके। ये पार्टनरशिप तोड़नी ज़रूरी है, क्योंकि एक दफ़ा 1-2 ओवर्स के लिए पार्टनरशिप रहेगी तो अनवर और दानिश में पूरी सलाहियत है कि वो इसको चेस डाउन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं उस्मान शनवारी दानिस्ता तौर पर ये चाहते हैं कि गेंद 2-3 टिप्पे लेती हुई जाए ताकि ये रिवर्स स्विंग करने के काबिल हो सके। हमने 2 टिप्पों पर तो अक्सर देखा कई टीमें फेंकती हैं गेंद को, इन्होंने 2 से भी ज़्यादा यहाँ पर टिप्पे लगवाए। 15 ओवर्स मुकम्मल हो गए, 86 पर 7। बहुत दिलचस्प मुकाबला हो रहा है, लो स्कोरिंग है, लेकिन इस पार्टनरशिप ने सिंध की टीम को मैदान में वापस ला खड़ा किया है और इस वक्त मोमेंटम बिल्कुल इस पार्टनरशिप के साथ है। अनवर अली काफ़ी एक्सपीरियंस ऑलराउंडर और ये 2 रन हासिल होंगे, गुड क्रिकेट, लेकिन केपी की जानिब से नहीं। बैकअप ज़रूरी हैं और यही वो गलतियां हैं कि जब पार्टनरशिप बिल्ड हो रही हो तो आपके बॉलर्स को और ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए, बट फील्डिंग साइड को भी, क्योंकि इस तरह की मिसफील्ड जो है वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर इशारा देती है कि आप थोड़ा सा कैजुअल हो रहे हैं। दानिश अजीज़ ने ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस पार्टनरशिप में, जिसमें स्ट्राइक रेट 100 से ज़्यादा रहा है। 10.5 की औसत दरकार है। अनवर अली इस वक्त ज़्यादा ख़तरा मोल नहीं ले रहे और दानिश भी मौके के इंतज़ार में रहते हैं। उन्होंने भी कोई शॉट जो है मैन्युफैक्चर करने की कोशिश नहीं की, ये मेरिट पर खेल रहे हैं। सेंसिबल क्रिकेट है, जहाँ पे उनको जोन में बॉल मिली है, दानिश ने चौका हासिल किया, छक्का हासिल किया, और वैसे रोटेशन और स्ट्राइक बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है यही बेस्ट वे है अगर सिंध चाहता है कि इस टोटल को चेस करें, क्योंकि इनको भी मालूम है कि ये आखिरी पार्टनरशिप है जिस पे ये रिलाई कर सकते हैं जीतने के लिए। उसके बाद मोहम्मद असगर हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, उनसे आप ज़ाहिर है कि तारे तोड़ लाने की आप तवक्को नहीं कर सकते बैटिंग में। बहुत अच्छी क्रिकेट सिंध की जानिब से, दोनों नौजवान मुसलसल दबाव में लिए हुए हैं मुखालिफ टीम को। हालांकि जब 7 विकेटें गिर गई थी बहुत ही कम स्कोर पर, तो ये 34 रन पर 7 विकेटें गिर गई थी 12वें ओवर में, और उस वक्त लगता था कि बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त हो जाएगी सिंध को, लेकिन इनके इरादे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आज क्या समझती है जो केपी टीम थी, इसने सिंध को आसान लिया, इतनी ज़्यादा तब्दीलियां कर दी, मोहम्मद हफीज़ को नहीं खिलाया, आसिफ अफरीदी, जुनैद खान, वहाब रियाज सबको बाहर बिठा दिया। केपी अफोर्ड कर सकता है जिस तरह का मोमेंटम इनके पास चल रहा है, और ऑब्वियसली रिलाई करते हैं अपने पेस अटैक पे। रिजवान ने चेंजेस की, कीपर को मौका दिया, मोहम्मद हारिस को, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा है मेन मैचेस से पहले चेक करना।
अच्छा, अभी राशिद खान नज़र आए थे, ये पाकिस्तान के फॉर्मर स्विंग बॉलर हुआ करते थे, सिंध की टीम के इन दिनों मैनेजर हैं, काफ़ी मुतमिन लग रहे थे। उनका चेहरा इस बात की निशानदेही था कि सिंध की पोजीशन बेहतर है इस मैच में। उनको एतमाद है इन दोनों पर। ज़ाहिर है कि सिंध के सपोर्टर्स को भी एतमाद होगा अनवर अली और दानिश पे। दानिश एक मैच जितवा चुके हैं यहाँ रावलपिंडी में ही। एक रन लिया, दानिश ने गेंद को मिड ऑन पर धकेल के स्ट्राइक अपने पास रखेंगे 92 पर 7। That last over cost them 20 runs. Just hope as Sindh that that's not the difference between the two. Well, I'll tell you what, Azhar, this match, the last stint that I did, I had a feeling that this might just go down to the wire, because just the way Anwar and Danish started off with this partnership, as if they just understood exactly what's required, the calculated risks, who not to attempt on. This played off Shaheen's over. If they get one good over somewhere, they can close this gap. 47 of 24. Sensible batting from both of these batsmen. And Shinwari is back into the attack. Anwar Ali is batting. Shinwari hit Anwar Ali for 20 in the last over. Can he return that favor? The call between the two has been excellent. They've been understanding the limitations that they have, the opportunities that are available. Both Danish and Anwar complementing each other. It's been Shinwari's show so far today. And if he can finish this off, he will have an amazing outing. From KP's point of view, they also need to understand that they don't loosen that grip that they have on the game. Nicely done. Sometimes as a bowling unit, you just feel that you've got 7 or 8 wickets of the opposition is bagged. It's yours. I think that's the mistake Sindh did. And they gave away, well, last 6 overs, 66, but that the very last over from Anwar Ali, 20 runs. At least good to see teams not giving up, which is very important. Yes, KP has somehow managed to come back in the game, and then now almost 1 wicket away from winning this encounter. He's played it up in the air. There's an opportunity available and lands between the 3 fielders, and he's messed it up. Oh my God, he's messed it up. The ball bounced and is just turned away from the fielder. He's again overshot the target. It looks like he lost it in the lights. He was putting his hand up to side the ball, and then overran Musaddiq it was,
That's unforgivable. It had to spin away. Trying to just guide it to third man. Just aborting at the last moment, Danish. It's an important knock from Danish Aziz. It means he can play under pressure. He has done it a couple of games back when he won the man of the match. So he has everything as a batsman for this format, and especially when it comes to chasing. It will be important to finish it off, but still a very good effort. Shinwari has bowled so well, 3 for 15 in his 3.4 overs. Thick outside edge, just a single. Shinwari has a long run up. A lot of energy in his run up. So Azhar, now as far as the options available to Rizwan, he's got 1 over for Shaheen Afridi and he's got 2 for Musaddiq. So this can be an opportunity. Now spin options are available, but I highly doubt that he'll go there unless Musaddiq goes for like a big over somewhere after this. When I was watching the game earlier on, I had a feeling that he should have tried Shoaib Malik, because today's spinner did get wickets as well. So when Danish Aziz came in, he should have used Shoaib. In the air, he'll pass that fielder. That's a boundary. That is a precious boundary from Sindh's point of view. Just to end the over. And 100 also comes up for Sindh after that. 103 for 7 after 17. Very well calculated risk by Anwar Ali. This nice follow through, which made him easy to cross over mid-off. So that's the equation, 36 of 18, that's the last 3 overs. Now the discussion going on is who bowls the over, and Shaheen has been brought in. So this is a bit of a gamble here. 3 overs left, this is Shaheen's last. Musaddiq has 2, so somebody will have to share the over with Musaddiq. Who's that going to be? Yeah, it's a tough one. You want Shaheen to bowl one of the last 2 overs because he hasn't used any spinners. He's used Musaddiq. Imran Khan, Shinwari and Arshad Iqbal all finished. So it's only 1 over left from Shaheen. Musaddiq have bowled 2. Will he go for him? You know, if he could have bowled Musaddiq now, then he could have bowled him 2 overs. So one of the other 2 overs will be bowled by a spinner. '69 this partnership. Oh, that's a good ball. Is there a bat involved in this? I think I heard a sound. It was nice and full. It was very close. We have to look at the replay. It's a nice joker, maybe just sliding the leg side, but it could have gone either way. It was one of those. Yeah, as a batsman, you got to be ready. He's going to fire them into the stumps for sure. He will not go for width. This over will decide how much Sindh will have to chase. The idea is right. You get a wicket, excellent. If you can bowl an economical over, you just
make it more difficult for Sindh in the last two. That's the gamble he's taken. Again on the leg stump, single. From Sindh's point of view, if you were out there, what will your strategy be? When Shaheen's bowling now and you know there are 2 overs, you're not sure who's going to bowl the last. Would you attempt something here? Would you like to see it off and take your chances? Somehow squeeze one boundary and get 7 or 8. There's no partnership up at the top for Sindh, and there's a very strong one at the end. These aren't partnerships, these are broken marriages. There's nothing there. He's hit that, should be more than 2. The chase is on, the boundary has been reached. That's the boundary Azhar Ali was asking about. They've got it. Fantastic shot over cover by Anwar Ali. He's an experienced campaigner, and he's showing his all experience that he got. His calmness at the crease, Anwar Ali. He's making the right decision most of the time. So it's a quick one there, but the singles are available. That's the pressure these two have kept on the circle fielders. They've been grabbing those singles consistently. Now it's 30 or 14. They want to keep that target within reach in the last 2 overs. 6 of this over, 2 more balls to go. they have to play it smartly. Shaheen will go for the wicket. Super work. It's just amazing how the fight is on. 1 more ball to go. They're playing it smartly. They're not panicking. They haven't looked panicked, even though they were under immense pressure. Score was 34 when these two came out to bat, when Anwar Ali joined Danish. Now it's 110. Full toss, just a single. So Anwar will keep strike. It's 1-1-1 for 7 after 18. That's the worm here. They've been playing seesaw. Sometimes Sindh goes up, sometimes KP takes the charge. I was just talking to Azhar just during the break that you come this far as a batting unit. They both came when the score was 34. It's 111 now. Then you believe that you got to finish the job. Otherwise, everything is undone. Yeah, momentum is with Sindh now. As we've seen, both the teams have scored their majority of the runs at the bottom. So the partnership came right at the end. The contribution is as well, but this partnership is a big one. They were down and out. Both of these guys put their heads together and played smartly. Well, if anything's going to happen, it's going to happen now. This is the over. And here's the first one. It's in the air.
It's in the air and they've got the captain running for it. Dives. Oh my God, what a catch. Rizwan without the gloves has done what no one else could. He has pulled it off from out of nowhere. That surely is the catch of the tournament. We've seen Asad Shafiq take a blinder, but this is even better. It was high and it was he was flying. Rizwan the Superman. Well, that catch can surely be said as in win you matches. Anwar Ali 33, don't take it away from him, but what a catch from Rizwan. It is 111 for 8. Well, I told you if anything's going to happen, it will happen now, and it's gone KP's way, courtesy a brilliant catch taken by the captain, Mohammad Rizwan. We've got to watch this again. Mohammad Hasnain, the new batsman, he's at the non-strikers, so now everything is at Danish Aziz's end for Sindh's point of view. He comes down the wicket, smashes it down to our corner, and they will settle for 1. That is simply unbelievable. The most important thing that he wanted that catch. It is very easily to shy away from that catch, but he's the captain, he's the leader, and he's leading from the front. The ground he covered, look at that. Anwar Ali is shocked. They will stay in their crease, just a single. Danish didn't even look at his partner. He just wants to keep strike. 45 for Danish. I guess that would be a correct decision at this time, but 9 of 26, 26 of 9. Still not over, but Rizwan, that was outstanding. He's played it high. That should be maximum. That's a big hit. That's gone straight into the side screen. 50 up with that maximum for Danish Aziz. So he's keeping the fight on. That's an outstanding 50 from Danish Aziz and a fantastic hit. It was needed, much needed boundary for them. And it's another 10 trees will be planted by Tuck and PCB. Important last 2 balls of this. Oh, that's a bad ball. He's gotten away with it, I tell you that. Well done by Imran. He's sending back his partner. Both of them were at the same end. Why didn't Danish run at all? He probably wants the strike, but there's only 1 ball to go. He wants he would like to strike for the last over as well, but he should have taken this single now. It was a bad ball. He got away with it, and there was a single. He'll just go for a 1, so keeps the strike. So Sindh have left themselves with 19 to get in the last over. So we're down to the last over. Azhar, Sindh conceded 20 runs in the last over, and 19 is required here. That's the 50 for Danish Aziz. A shot making, very nice, nicely to the covers. Anything down the leg, he's played that. He's very strong in that backward point area. Straight hits,
He doesn't shy away. Nice follow through of the bat, and he hits them clean. Yeah, a mixture of power and placement. Danish Aziz, they need what they conceded almost in the last over. Now the helmet is being brought in because you're right, Azhar. We will go with Iftikhar to bowl medium pace. 19 of the last 6. So I was just saying 20 were conceded by Sindh. Exactly that is required. That last over, how important is that? Prediction time. I have a feeling that you want me to tell you who's going to win? Well, I think Sindh will cross the line. Keeping part-time bowler going at medium pace. I think the first 2 balls will decide if they can start off well. What a shot! Just 1 bounce, 4. A great start to the over by Danish Aziz. That will put more pressure on Iftikhar. It was there to be hit, and he smashed it. It's tough at this stage. You've been given the most important over of the match. You're bowling round the wicket medium pace. Now, which region do you go? A batsman who's not out 56, and you know he's going after you. It's always good to start the over big. Now there's a mini meeting going on. All Rizwan need to tell Iftikhar, he needs 1 wicket. If he gets Danish Aziz out, then that probably will be the game for KP. But that's the mindset, isn't it? Is Iftikhar looking for a wicket, or is he looking to bowl a couple of dots? He would look to bowl a boundary free ball, and in that probably there is a chance of a wicket. So yeah, it's a fair opportunity because Danish will go after him. That might create one. This time on the onside, he doesn't want to run. So it's obvious he wants to face all 6. He needs to get more fuller, get into the block hole somehow. Pace sometimes doesn't matter if you get to that length. But if you keep bowling that area, the boundary can come anytime. They've got to hit a boundary here halfway through the over. Oh, that's a brilliant ball. Wow. That's an excellent ball from Iftikhar. That's it. That's the length. Don't do it. Don't do anything else. Now they need boundary of every ball. That was exceptional Yorker by Iftikhar. He's hit him high. That's big. That will be -6 from what's required. It's down to single figures. 2 balls, 9 runs. You said it's getting down to the wire. It has gone down to the wire. Super over possibility. Sindh can win possibility. KP can also win. And the 10 trees will be planted as well. Yep, that's for sure. And quite a few of them. So 2 boundaries, then you get to a super over. You hit a 6 and a boundary, you're home. 130 for 8 Sindh. Here comes Iftikhar. 9 of 2. Oh, is that a boundary? Yes, it is. Full toss. Smacks that one pass long off. So it's now 5 of the last ball. It's going to be an amazing finish. But it looked like a very slow kind of a match. But how entertaining that this match has become. It's going to be tough. He's trying to York him, but you miss that length by a bit and it ends up as a low full toss. So where does Iftikhar go? 5 to win, 4 to super over.
Low full toss, hit high in the air. Sindh wins this match. What a massive hit. And Danish Aziz has taken the game away. Batted till the last ball. And what a finish by Sindh. 140 for 8. Spectacular knock from him, alongside of the great partnership that he had with Anwar Ali. You can see the jubilation in Sindh camp. And what an innings that will be for Danish Aziz, for his career, for his future. He will gain so much confidence after this innings. That is simply unbelievable. An innings to remember. Yeah, super knock from Danish Aziz, and don't take it away from the man on the left of your screen, Anwar Ali, who batted brilliantly alongside him. But you got to praise him. 72 of 47, probably just waited till the last over, started off with a boundary, 2 dots, 6-4-6, as if it was nothing. So this game, when it was obviously looking like done and dusted for Sindh, when they were 34 for 7, who would have thought that Sindh would take it and bring it down to the last ball and win this match, and valuable points in this tournament. That's the last one. Big hit, straight, hit hard, straight into the stands. And that is game, set and match for Sindh. Didn't leave that crease in the last over. All the reason to smile. Kept that belief that will get the moment where he will be able to hit those big shots. Good calculation, because somewhere KP was missing out on that 1 over which they had to fill in, and that was of Iftikhar. So that brings match 23 to an end, and what a finish we've had. One of the closest games up till now in this national T20, and it's been an absolute entertainer. So have a look at what happened here. Sindh, if you look at the score column, 13-0, 1-5, 13, nothing is happening for Sindh. They're 34 for 7, and suddenly Danish Aziz and Anwar Ali's partnership changed the complexion of the game. Danish remains not out of 72 of 47, Anwar Ali 33. Very valuable runs, and they take Sindh home on the last ball. 140 for 8 is what they finish off with, and winning this game nicely. Now we're talking about how much pressure and what calculations are required. Give you a clear example of the partnerships. There's nothing available all the way down in the order. It's just that last bit you see, Anwar Ali and Danish Aziz. That's the partnership which was so valuable, and it did bulk of the scoring. More than half of the score was done by these two, and they waited for their moment, and it paid off. Can't take it away from KP's bowling and fielding. They gave a brilliant fight. 3 wickets for Usman Shinwari, all-round performance from him. 2 wickets for Imran, a wicket apiece for Shaheen and Musaddiq. Their hard work just didn't pay off in their favour. They lost this match, but it was a great game of cricket. So the toss was won by Sindh. They put Khyber Pakhtunkhwa into bat. Khyber Pakhtunkhwa was in trouble through and through. Only managed 138 for 9, with Usman Shinwari's highest score not out 36. Who would have thought that Sindh would make a game out of this? It should have been a walk. Everyone was struggling except for Danish Aziz, who scored not out 72 and took the game away, Sindh winning by 2 wickets. Time for a short break, and when we come back, we'll be talking to the 2 captains and the man of the match. चेक ठीक है। वाला माइक। हेलो साकिब भाई, आवाज़ आ रही है साकिब भाई? हेलो। यॉर्कर कर गया वो सही है।
अगर वो सीधा लग बीच जाता तो वाला। सीधा वो तो फिर लेकिन ये बड़ा वो था, उसने सिंगल भी नहीं लिया, उसको पता था कि चांस बेस उसका ही नहीं है, तो वो तो ही है। वो सिंगल से लेकिन उसको पहले वाला सिंगल लेना चाहिए था जो सेकंड लास्ट बॉल वाला था ना, ताकि वो आखिरी बॉल पे उसको कहता कि भी तू घुमा दे, ट्राई कर दे, आउट हो गया था, आउट हो गया। हाँ जैसे उसने छक्का नहीं मार दिया था इलियास ने सरदन की मैच में। मैच में तो अभी तो सवाल भी नहीं सोचे, सवाल भी नहीं सोचे, मैं तो सीधे ही नहीं सही है, ठीक है, सवाल हो जाएंगे, कोई मसला नहीं, मैच इतने सारे मैच में हुआ है अपने वही होगा, दानिश मैंने तो मैच होगा, मुझसे ये ज़रूर पूछेगा कि लास्ट बॉल पे तुम्हारे ज़हन में क्या था, लास्ट बॉल में क्या था? पकड़ लो।